नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज डिक्टेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 53 एंड एक्सरसाइज नंबर 54 की हमने एक साथ डिक्टेशन करी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसकी स्पीड थी 75 वर्ड पर मिनट। तो मैंने बोला था कि 75 से ऊपर स्पीड चली जाएगी, पर 75 तक की स्पीड रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 55 की डिक्टेशन, जिसके अंदर 8 सेंटेंसेज हैं। तो इसकी स्पीड 75 से ऊपर जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिक्टेशन को। रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। Until quite recently, the volume of our business in the south was quite small, but since last November we have had an office in Fulham, and the volume of sales and risen steadily. Sales in this territory for January and February were the best in the history of the firm. In these 2 months we have sold twice as much in the south as we sold last year. The fact that this is almost as much as we have sold in Manchester shows that our new policy is entirely justified. We feel that the result of our new policy is most satisfactory. The race is not always to the swift. Sometimes too much haste makes for less speed. Never waste time by having to do the same job twice. This is useful advice, and if you will follow it, it will assist you to be successful. Write your notes accurately and neatly so that not only you but anybody else can read them easily. तो ये थी हमारी आज की डिक्टेशन एक्सरसाइज नंबर 55 की। तो इस डिक्टेशन की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ड्स इसके अंदर मिस्टेक्स निकलते हैं तो उन वर्ड्स की आपको 5 से 6 बार, उससे ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक वो क्लीन नहीं बनते, नीट नहीं बनते, और जब तक वो आपको लर्न नहीं हो जाते तब तक उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है उस वर्ड की। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन स्टूडेंट्स में शेयर करें जिनको शॉर्ट हैंड सीखनी है और जिसको टाइपिंग सीखनी है। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आता है वो सभी मिल जाएगा। और एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस का पार्ट पूछा जाता है, उसका मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस पेज को भी फॉलो कीजिए।